गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है क्रॉस पैथी इन इंडिया। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की परमिशन दे दी है, जिनके पास कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मॉडर्न फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि जो हेल्थ केयर डिलीवरी में चैलेंजेस आ रहे हैं उसे एड्रेस करना चाहती है गवर्नमेंट। लेकिन इससे जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाराज़ हो गया है। और क्रॉसपैथी क्या होता है? क्रॉसपैथी का मतलब होता है कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रेंड है, अगर वो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है या ट्रीटमेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकता है, उसको हम क्रॉसपैथी कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है ये इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में। क्रॉसपैथी जनरली इलीगल होती है जब तक स्टेट उसको रिकॉग्नाइज ना करे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि अगर आप अपनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर एक्सपर्टीज से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हो मेडिसिन को, उसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस मानेंगे। क्रॉसपैथी जो है उसमें कई लीगल एक्शंस लिए जाते हैं उनके अगेंस्ट बाय इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट या फिर स्टेट स्पेसिफिक मेडिकल लॉज द्वारा भी। ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि क्रिटिकल शॉर्टेज है एलोपैथिक डॉक्टर्स की। तो आयुष जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो इस गैप को फिल करते हैं मोस्टली। कई स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा, उन्होंने भी क्रॉसपैथी अलाउ भी किया है। लेकिन होता क्या है कि पेशेंट जो रूरल एरियाज़ में बैठे हैं वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स या फिर अर्बन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है आयुष प्रैक्टिशनर्स उनके लिए एक्सेसिबल ऑप्शन हो जाता है। तो चैलेंजेस क्या हैं इसमें? क्रॉसपैथी में क्या होता है कि उनकी ट्रेनिंग तो सिर्फ एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हुई है, तो दूसरे जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें उनकी जो है ट्रेनिंग हुई ही नहीं होती है। ठीक है, तो कई बार इनकरेक्ट डायग्नोसिस हो सकता है, इम्प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पेशेंट को। क्योंकि ऐसे कई लॉज भी बनाए हैं, कोर्ट रूलिंग्स भी आए हैं, तो इसलिए ये नहीं पता कि परमिसिबल क्रॉसपैथी क्या है। ठीक है, ओवरसाइट जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है गवर्नमेंट की वो भी बहुत वीक है, खासकर रूरल एरियाज़ में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इसको अपोज करती है। तो हुआ क्या कि 2014 में भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अलाउ किया कि वो अ, उन्होंने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करके कहा कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स भी जो हैं, जो सर्टिफाइड हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आईएमए ने इस लेबल को जो है क्रॉसपैथी जो है वो डिक्लेयर करके कहा है कि इससे पेशेंट सेफ्टी जो है अंडरमाइन होगी। 2017 में भी जब होम्योपैथ्स को जो है अलाउ किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा कि वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सके, उस मूव को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक दिया था। लेकिन अब यही जो है वो दोबारा से गवर्नमेंट लेकर आई है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे एक्यूट शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। लगभग 13 लाख रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और पौने 6 लाख के आसपास आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं। तो इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स को की सर्विसेज को यूटिलाइज करना पड़ रहा है हेल्थ केयर गैप्स को ब्रिज करने में। अब इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? तो ऑफ कोर्स पेशेंट्स की सेफ्टी और एफिकेसी के ऊपर कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे। मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस भी हो सकते हैं। तो रेगुलेशन भी जो है उसमें भी चैलेंजेस आएंगे कि कैसे हम प्रैक्टिसेस जो है सेफ़ प्रैक्टिसेस खासकर रूरल एरियाज़ में जो है वो हम फॉलो करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें ज़रूरत है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएँ, बेटर रूरल इंसेंटिव्स दिए जाएँ डॉक्टर्स को कि वो रूरल एरियाज़ में भी सर्व करें, और वर्किंग कंडीशंस जो है एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए वो भी इम्प्रूव की जाए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ मैरीटाइम सेक्टर। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि इंडियन मैरीटाइम सेक्टर को लगभग $1 ट्रिलियन की ज़रूरत है बाय 2047, और 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे उनके जो है डेवलपमेंट के लिए 2030 तक। ठीक है, तो इंडिया का 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, जिसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 माइनर पोर्ट्स हैं। इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर 95% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम और 75% बाय वैल्यू जो है वो हैंडल करता है। और पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो 87% इंक्रीज़ देखने को मिला है कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी में इंडिया की। 100% एफडीआई और टैक्स इंसेंटिव्स जैसी पॉलिसीज़ जो हैं उसने इस सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। तो क्या की डेवलपमेंट्स हैं मैरीटाइम सेक्टर में? रिड्यूस्ड कंटेनर टर्न अराउंड टाइम है 22.57 आवर्स का 2023-24 में। इंडिया के पास जो है लार्जेस्ट पोर्ट बना है पारादीप पोर्ट 2024 में। और इंडिया फोकस कर रहा है ग्रीन शिपिंग, डिजिटाइजेशन और स्मार्ट पोर्ट डेवलपमेंट पर। ठीक है,
तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि सपोर्ट करना चाहती है मैरीटाइम ग्रोथ को, वो हैं जैसे सागरमाला प्रोग्राम, जिसमें कि 130 प्रोजेक्ट्स जो फोकस कर रहे हैं कोस्टल बर्थ्स पर, कनेक्टिविटी पर, फिश हार्बर्स पर, रो पैक सर्विसेज पर। फिर इनलैंड वाटरवेज की डेवलपमेंट की जा रही है, 26 न्यू नेशनल वाटरवेज नेविगेबल बनाए जा रहे हैं। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम बनाया जा रहा है जो कि रिप्लेस करेगा कन्वेंशनल टग्स को इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स के साथ 2040 में तक। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हब्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे पारादीप, ट्यूटिकोरिन और कांडला पोर्ट्स पे, ताकि डीकार्बनाइज किया जा सके शिपिंग सेक्टर को। हांगकांग कन्वेंशन ऑन शिप रिसाइकलिंग जो है वो हमारे इंडियन शिप यार्ड्स को बेनिफिट करेगा। रिसाइकलिंग यार्ड्स जो है अलांग में बनाए गए हैं वो इन कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, इनके स्टैंडर्ड्स को। इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर जो है वो हमारी कंट्री की रिसर्जेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेजर पोर्ट्स अभी लगभग 820 MMT ऑफ कार्गो एनुअली हैंडल कर रहे हैं। इंडिया जो है वो मेगा पोर्ट्स के एरा में एंटर कर चुका है, और कंटेनर ड्वेलिंग टाइम भी जो है वो रिड्यूस होकर 3 दिन तक हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसने क्रूशल रोल प्ले किया है इंडिया की पब्लिक हेल्थ को एनहेंस करने में, जिसकी वजह से हम मैटरनल मोर्टेलिटी, ट्यूबरकुलोसिस, सिकल सेल एनीमिया इसको टैकल कर पाए हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या है? ये हमारे को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक मिशन है सभी लोगों के लिए। तो हुआ क्या था कि NRHM जो रूरल हेल्थ मिशन था वो 2005 में लॉन्च हुआ, 2012 में अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ। इन दोनों को क्लब करके नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया गया, ताकि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा सकें, अफोर्डेबल इक्विटेबल सर्विसेज दी जा सकें, हेल्थ केयर सर्विसेज को अकाउंटेबल भी बनाया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देती रहती है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को, और फोकस रहता है NHM का कि इम्प्रूव की जा सके मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। हेल्थ केयर जो है डिसीजेज़ जो कि ट्रांसमिट नहीं हो सकती और जो ट्रांसमिट हो सकती है, दोनों पर फोकस है। ठीक है, तो इसका अचीवमेंट क्या हुई है नेशनल हेल्थ मिशन की? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो डिक्लाइन हुआ है 83% से लगभग 1990 से लेकर अभी तक। ट्यूबरकुलोसिस में भी जो है वो इंसिडेंस जो है ट्यूबरकुलोसिस का वो भी कम हुआ है पिछले 5-7 साल में, या 10 साल में एक्चुअली अगर हम देखें। मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस हुआ है। तो हमने 2024 तक अगर हम देखें तो 220 करोड़ वैक्सीन डोजेज़ लगाई हैं कोविड की। 1.5 लाख से ज़्यादा निक्षय मित्र वॉलंटियर्स हैं ट्यूबरकुलोसिस से डील करने के लिए। यूविन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जनवरी 2023 में रियल टाइम वैक्सीनेशन ट्रैकिंग के लिए। तो इंडिया जो है वो एक ट्रैक पर है कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है मैटरनल, चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टेलिटी के, वो 2030 से पहले ही इंडिया अचीव कर लेगा बिकॉज ऑफ NHM's एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टारगार्ड डिसीज़। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो स्विट्ज़रलैंड के रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक जीन एडिटिंग टेक्निक डेवलप की है जो कि ट्रीट करने में हेल्प करेगी स्टारगार्ड डिसीज़ को। तो स्टारगार्ड डिसीज़ जो है वो कॉमनली कॉज होती है चेंजेस की वजह से जो एक जीन में आते हैं ABCA4 जीन में। इससे इन्फ्लुएंस होता है कि ह्यूमन बॉडी कैसे विटामिन A यूज़ करती है। ये एक इनहेरिटेड डिसीज़ है जिससे प्रोग्रेसिव विजन लॉस देखने को मिलता है चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में। इस डिसीज़ से जो है वो लिपोफस्किन जो कि होता है आपका येलोइश ब्राउन पिगमेंट आपकी आई में, उसको अफेक्ट करती है ये। तो इसमें बहुत ज़्यादा उनको लिपोफस्किन बनने लगता है, तो जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना को जो है वो हार्म करने लगता है। तो इसलिए जो है स्लो लॉस ऑफ सेंट्रल विजन होने लगता है, ग्रे, ब्लैक या हेजी स्पॉट्स आ जाते हैं सेंटर ऑफ द विजन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन ये मेल्स में है। इसका कोई क्योर अवेलेबल अभी तक नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल वोटर्स डे। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 15th नेशनल वोटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है जाएगा 25 जनवरी को। साल 2011 से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है फाउंडेशन डे को हम मना सकें, और सेंट्रलिटी ऑफ वोटर के ऊपर इसका फोकस रहता है, और एनरोलमेंट ऑफ न्यू वोटर्स करने का भी ये जो है एक तरह से दिवस होता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। टॉपिक गवर्नेंस और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 साल हो चुके हैं सुकन्या समृद्धि योजना को, और डॉटर्स के लिए जो है बहुत हेल्पफुल है ये स्कीम। तो एक सेविंग स्कीम है 2015 में लॉन्च की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर। गार्डियंस जो है
वो एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं अपने गर्ल चाइल्ड के लिए किसी भी कमर्शियल बैंक या इंडिया पोस्ट ब्रांच में। एप्लीकेंट जो है वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है एक पेरेंट या लीगल गार्डियन ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड द्वारा। गर्ल चाइल्ड जो है वो लगभग 10 साल से कम एज का होना चाहिए। एनआरआई जो है वो एलिजिबल नहीं होते हैं अकाउंट खोलने के लिए। मिनिमम 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में। कोई नंबर की लिमिट नहीं है कि कितना नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एक मंथ में या फाइनेंशियल ईयर में किए जा सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इसमें 21 साल का रहता है अकाउंट ओपनिंग से। और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो पहले 15 साल ही सिर्फ डालनी होती हैं। और ये अकाउंट जो है मैंडेटरीली ऑपरेट किया जाना चाहिए गर्ल चाइल्ड के द्वारा आफ्टर वो 18 साल की एज जब अचीव कर ले। विड्रॉल अलाउड होता है कुछ केसेस में, जैसे कि अगर वो 18 ईयर्स पास हो चुके हैं या 10th स्टैंडर्ड जो है वो गर्ल चाइल्ड पास कर चुका है, या फिर हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरत है, मैरिज के लिए ज़रूरत है। इन केस ऑफ मेडिकल सपोर्ट, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में भी जो है वो पैसा निकाला जा सकता है। और इसमें टैक्स एग्जाम्पशन भी मिलती है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डायरेक्ट किया है कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्हें ये बताए राइटिंग में कि क्या क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है यूज़र डेवलपमेंट फीस को कैलकुलेट करने के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा। तो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक स्टेचुटरी बॉडी है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008 के द्वारा इसको बनाया गया है नरेश चंद्र कमेटी की रिकमेंडेशंस पर। सिविल एविएशन सेक्टर के लिए रोड मैप जिसने प्रिपेयर किया था। तो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो ओवरसी करती है इकोनॉमिक रेगुलेशन ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया। टैरिफ्स और अदर चार्जेस को रेगुलेट करती है। मेन ऑब्जेक्टिव है इसके लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट लेकर आना एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ में। 2008 के एक्ट के हिसाब से एक मेजर एयरपोर्ट की डेफिनेशन ये थी कि अगर एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक 15 लाख से ज़्यादा का है, कम से कम 15 लाख है, तो उसे मेजर एयरपोर्ट मानेंगे। लेकिन 2019 के बाद इस थ्रेश होल्ड को 35 लाख एनुअल पैसेंजर्स के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is cross-pathy in India. This topic is important for your governance section. So Maharashtra Food and Drugs Administration has recently given a directive which has allowed homeopathic practitioners who have completed a certificate course in modern pharmacology. They will be able to prescribe allopathic medicines. So this move is aimed to address challenges in healthcare delivery, but it has invited strong opposition from the Indian Medical Association and others. So, what is the meaning of cross-pathy? It refers to the practice when a medical practitioner who is trained in one system of medicine, like Ayurveda, homeopathy, or Unani, prescribe medicines or perform treatments from another system, like allopathy, okay, or modern medicine. So, this practice is a significant issue in India's healthcare sector. Cross-pathy is generally deemed illegal unless it is explicitly authorized by state laws or special government orders. Supreme Court of India has ruled that practicing medicine outside one's expertise without explicit authorization will be counted as medical negligence. And cross-pathy practitioners have also faced legal actions under the Indian Medical Councils Act also. Okay, so what are the reasons why cross-pathy is being allowed? So India is facing a critical shortage of allopathic doctors. So Ayush practitioners are utilized to fill this gap. Some states like Maharashtra and Goa have allowed this. Patients in rural areas, they cannot also afford specialist doctors or urban healthcare facilities. That's why Ayush practitioners become a accessible option for them. But there are challenges as well. So cross-pathy practitioners, they lack comprehensive training in modern medicine. So this will also conflicting laws and court rulings will also create confusion about what constitutes permissible cross-pathy. And there will be, of course, regulatory oversight will be weak, especially in rural areas. Indian Medical Association is also strongly opposing this. So in 2014, Maharashtra government redefined registered medical practitioner to also include certified homeopathic practitioners. IMA has labeled this move of cross-pathy as, and it has stated that it undermines patient safety. So there are also judicial challenges, like in 2017, similar notification which was permitting homeopaths to practice allopathy was stayed by Bombay High Court, but the Maharashtra government is repeating this same notification now. Government is saying that we want to address acute shortage of doctors. We have about
13 lakh registered allopathic doctors and 5.65 lakh Ayush practitioners, and the government wants to utilize alternative practitioners to bridge healthcare gaps. So, what will be the implications of this move? Concerns will be raised about the safety and efficacy of treatments, and there could be potential risk of medical negligence in rural and underserved areas as well. Challenges will be there in regulating the prescribed practices, especially in the rural settings. This also highlights the need for structural reforms, better rural incentives, and improved working conditions for MBBS graduates. Okay. So the next topic is India's maritime sector. This topic is important for your economy section. So according to Secretary of Union Ministry of Ports, Indian maritime sector requires $1 trillion by 2047 and 5 lakh crore by 2030 to realize its full potential. So India's 7,500-kilometer coastline with 12 major ports and over 200 minor ones positions it as a vital trading hub along the world's busiest shipping routes. India's maritime sector handles 95% of trade by volume and 75% by value. With an 87% increase in cargo handling capacity since 2014 and 15, India has managed 819 million tons of cargo in this year. Policies like 100% FDI and tax incentives have further strengthened this sector. So this has led to reduced container turnaround time. India has also developed its largest port called Paradeep in 2024. Now we are going to focus on green shipping, digitization, and smart port development as Panch Karm Sankalp. Okay. So government schemes are also supporting maritime growth, like the Sagarmala program, which is meant for 130 projects focused on coastal berths, connectivity, fish harbors, and RoPax services. Inland waterways development is also being made, where plans are there to make 26 new national waterways navigable. Then this green tug transition program aims to replace the conventional tugs with eco-friendly alternatives by 2040. Green hydrogen production hubs will also be established at Paradeep, Tuticorin, and Kandla ports to decarbonize the shipping sector. Hong Kong Convention on Ship Recycling will benefit Indian shipyards. Recycling yards in Alang are already complying with convention standards, positioning India as a global leader in ship recycling. India's maritime sector is central to the country's economic resurgence, and major ports are currently handling 820 MMT of cargo annually. And the aim is to increase this by sixfold to 10,000 MT per annum by 2047. Okay, India has also entered the era of mega ports with Vadwan Port and Galathea Bay Port in Nicobar. Container dwelling time has also reduced to just 3 days now. Okay. So the next topic is National Health Mission. This topic is important for your governance section. So National Health Mission has played a crucial role in enhancing India's public health by significantly reducing maternal mortality, tuberculosis, and sickle cell anemia. So National Health Mission aims to provide quality healthcare services to all people, and National Rural Health Mission was launched in 2005. Then in 2012, National Urban Health Mission was introduced, and the NRHM was rebranded as the National Health Mission. Okay. So the aim is to enhance quality of healthcare services, make them affordable and equitable, ensure that healthcare services are accountable as well. So Ministry of Health and Family Welfare also provides financial and technical support to states and union territories for this mission. The aim is to improve maternal and child health, improve healthcare facilities, focus on diseases which cannot be transmitted or which can be transmitted as well. Okay, so what are the achievements of NHM? Maternal mortality ratio has declined by 83% since 1990. The incidence rate of tuberculosis has reduced also in the last 10 years. Mortality rate has also declined. We have been able to vaccinate 34.77 crore children under Mission Indradhanush. 220 crore vaccine doses of COVID have been administered in the last 4 years. To deal with tuberculosis, 1.5 lakh plus Nikshay Mitra volunteers have been supporting the patients. UWIN platform for real-time vaccination tracking was also launched in January 2023. So, because of
NHM's efforts, India is on track to meet the UN Sustainable Development Goals for maternal, child, and infant mortality well before 2030. Okay. So the next topic is Stargardt disease. This topic is important for your social issues. So researchers from Switzerland are saying that they have developed a gene editing technique that could help treat Stargardt disease, which is commonly caused by changes in a gene called ABCA4. This gene influences how the human body utilizes vitamin A. So it's an inherited disease that leads to progressive vision loss in children and young adults. So people with this disease have too much lipofuscin. It builds up over the macula, which is the central part of the retina, and it is responsible for clear and sharp central vision. Okay, so everybody's eyes contain a yellowish brown pigment called lipofuscin. So the most common symptom of Stargardt disease is a slow loss of central vision in both eyes. Other symptoms may include gray, black, or hazy spots in the center of the vision, sensitivity to light, and color blindness. So, this disease is observed more commonly in males than females, and currently there is no cure for this disease. Okay. So the next topic is National Voters Day. This topic is important for our governance section. So 15th National Voters Day will be celebrated across the country on 25th January. So the day is being celebrated since 2011 to commemorate the foundation day of the Election Commission of India. The aim of this day is to underline the centrality of the voter and raise electoral awareness. It also promotes the enrollment of new voters. Okay. So the next topic is Sukanya Samriddhi Yojana. This topic is important for your governance section and also your social issues. So this year marks the 10 years of Sukanya Samriddhi Yojana, which has helped families to invest in the bright futures of their daughters. So this is a savings scheme launched in 2015 as part of the Beti Bachao Beti Padhao campaign. This enables guardians to open a savings account for their girl child with an authorized commercial bank or India Post branch. The applicant must be a citizen of India. The account can be opened by a parent or legal guardian of the child. The girl child must be below the age of 10 years. NRIs are not eligible to open these accounts. So investment of minimum 250 rupees and maximum of 1.5 lakhs in a financial year can be made. There is no limit on the number of deposits either in a month or in a financial year. The maturity period of this scheme is 21 years from the account opening, and contributions have to be made for the first 15 years only. The account needs to be mandatorily operated by the girl child after she attains the age of 18 years. Withdrawal shall be allowed in certain cases, like when the child attains the age of 18 years or he or she has passed the 10th standard, whichever is earlier, or for higher education, marriage purposes as well. Premature closure is allowed in case of death of the depositor or even in case of life-threatening diseases. So investment into this account is tax exempted under Section 80C of the Income Tax Act. Okay. So the next topic is Airport Economic Regulatory Authority. This topic is important for our governance section. So Parliament's Public Accounts Committee has recently directed the Airport Economic Regulatory Authority to give a detailed reply in writing on the criteria used to calculate user development fee charged by the airport operators. So this Airport Economic Regulatory Authority is a statutory body which was set up on the recommendations of the Naresh Chandra Committee to prepare the roadmap for civil aviation sector. So it's an independent regulatory body tasked with overseeing the economic regulation of major airports in India. It regulates tariffs and other charges as well. Okay, its main objective is to include its main objective is to create a level playing field, foster healthy competition among major airports, and promote investment in airport facilities. Okay, so what are major airports as per the original act? An airport is a major airport if it has an annual passenger traffic of at least 15 lakh people. But in 2019, amendment to this act was made to increase this threshold to 35 lakh annual passengers. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.